We don't get to go back to our country. So if you don't spot me again in this video, so Guys, I'm going to upload this vlog today only, and if anything happens, you know what to do. In difficult times. Also, I hope that my English is clear enough. Hi guys, so I am going on my first work trip to Jordan for 1 week, and I'm traveling alone. Means Anuj is not traveling with me, but I'm traveling with a bunch of content creator, amazing content creator. We are around 10 people together. कुछ मुंबई से जा रहे हैं, कुछ दिल्ली से जा रहे हैं, तो दिल्ली से हम 4 क्रिएटर हैं. And I'm super excited for this trip. I'm going to vlog this entire trip. Right now I'm at the airport, और मैं I'm going to go from here to Bahrain, and from Bahrain to Amman, which is the capital of Jordan, and वहाँ से हम लोगों का experience start होगा. So let's go. I'm going to vlog each and every step of this trip. So be super excited to watch this entire series of the Jordan vlog. So I just reached Bahrain airport, and we have a change over here. So we are going to quickly change our flight. We just have like 1 hour to change, and then वहाँ से हम लोग जाएंगे Amman, which is the main capital of Jordan. So we have reached Muharraq airport, and this is how the airport looks like. It looks pretty chic and quite huge. I can see all the brands over here. Okay guys, so we just landed in Jordan, Amman, and the tourism board is here to receive, and it feels amazing already. ये देखो कौन है मेरे साथ. We are doing the so we're back again for the like third trip in 3 third years. trip Right? together. So every 3 years, I think so. No, every year, like it's been 3 years we've been tripping together. So it's been like हम लोग साल में एक ही बार मिलते हैं, वो भी ट्रिप में मिलते हैं. वरना मिलते ही नहीं है. और फिर ऐसी दोस्ती है हमारी, और पक्की content अभी दोस्ती. sorted हो गया. अभी देवो है मेरे साथ, तो फिर टेंशन नहीं है. हाँ, ट्रिप वाली दोस्ती है, लेकिन अच्छी है. पहले तो हम लोग लंच करने जा रहे हैं. सो विल बी लंचिंग. बहुत ज़्यादा टायर्ड है, 2 दिन से सोए नहीं हैं. 2 दिन से बिना सोए ट्रैवल कर रही, क्योंकि ट्रैवलिंग में बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो जाती है मुझे. एंड एनीवेज पहुँच गए हैं. सुपर एक्साइटेड टू एक्सप्लोर द न्यू कंट्री. इसके बारे में बताएंगे. बहुत पुरानी कंट्री है, इसकी थोड़ी हिस्ट्री भी जानेंगे और आप लोगों के साथ शेयर करेंगे. सो स्टे ट्यून्ड. لا هي طيارة وسط ويوم. So we have reached the back belt. हम लोग यहाँ वेट कर रहे हैं. You can see Amman duty free behind me, और यहाँ पे हम अपना पूरा ग्रुप है. So we are just waiting for the baggage. Say hi guys. So we are just getting familiar with each other. अपना 10 लोगों का ग्रुप है. भाई They have लोग, literally taken our passport, so I'm assuming yeah, we are the guys. slaves here. वो And we लोगों don't ने get हम to लोग go का back to our पासपोर्ट country. ले लिया है. And So if you don't spot me again in this video, so guys, I'm going to upload this vlog today only, and if anything happens, you know what to do. Please reach out for help, okay? Just kidding. They are just keeping it, I think, because we are invited by the government, and they just want to make sure कि हम लोग का पासपोर्ट सही सलामत है, सब एक जगह है. और I don't know. So basically that. तो उसके बाद हम बैग तो अभी तक आया नहीं, बट सब लोग इकट्ठे एक साथ हैं. सारी यहाँ के जो बॉर्डर्स है ना, बॉर्डर एक साइड में इजराइल है, यू नो वॉर जोन चल रहा है. एक साइड में सीरिया है, एक साइड में सऊदी अरेबिया है. तो यू नो वाई या सो बट सब कुछ सही सलामत है, इसीलिए अदरवाइज डेंजरस कुछ होता, खतरा होता तो हमें बुलाते नहीं. सो लेट्स फॉरगेट दैट एंड हैव फन फॉर नाउ. तो ये है अपना ग्रुप पूरा, और देखिए अपने बैगेजेस. We got the baggage, and this is the airport, how it looks like. पीछे पूरा टीम है अपना. अब हम जा रहे हैं.
through those hard and difficult times. Also, I hope that my English is clear enough for you. It's fabulous. Helping you to understand. And of course, we will be telling all the information and the history about all these places. Okay? We are getting closer to the city of Amman. These are the outskirts of Amman, which is quite modern because the city of Amman is becoming quite busy. And I think the city was designed maybe for 3 million. And I know it's nothing for you. But now I think we have like a little bit over 5 million people in Amman. Our first lunch place directly from the airport. We have come here and this place is called Tawahin Al Hawa. यहाँ पे हम आए हैं खाना खाने. हम लोग यहाँ पे खाना खाने आए हैं and this is the entire setup. Looks like खाने में गलती डाल दूंगा फोर्स में. तो इतने बड़े थाली में खाना खाने वाले हैं क्या? हम सब एक में से ही खाने वाले हैं. I don't know why we have plates. The plate, the main plate, and we also eat like this. Yeah. Okay. तो यहाँ पे सृष्टि को लग रहा है कि यहाँ पे सब कुछ सर्व होगा और हम लोग एक साथ टूट पड़ेंगे. Really? खुलता है? Is it heavy? The Mahakali. Look at the food coming. Oh my god, the food looks yummy. Okay, so we have come to this place to eat our lunch and this looks so fab. इतना ज़्यादा ट्रेडिशनल है ये पूरा जगह और इतना मिनिमलिस्टिक वाइब दे रहा है. खाना और के लग रहा है. I am so everyone tempted. decided to get beef now, so हाँ, right. But the food ruined the looks video. yummy. Wow, look at Where's the beef? this. Tabbouleh is my favorite. नहीं खा रहे सब चलो. This is like huge. हम लोग पहुंच चुके हैं सेंट रीजेस. This is our hotel. Looks so pretty. This is St. Regis Amman. Okay, हम होटल पहुंच गए हैं and this is my room. Let me give you the room tour quickly. This is how the room looks like. It's a lavish wardrobe. ये रहा. This is a bathroom. टब भी है. Let's see इस्तेमाल कर पाऊँगी या नहीं. I really don't know, but yeah, the shower and the toilet area. और सेंट रीजेस प्रॉपर्टी में मैं पहली बार रुक रही हूँ. The amenities. This is the toilet. This is the shower. Sorry, मैं अभी फर्स्ट टाइम देख रही हूँ. और अभी दिखाती हूँ रूम. So this is my room. All alone in this room. Such a huge room. And this is the view. This is city view. Absolutely stunning city view. Wow. And this is how the room looks like from this side. Okay, so that was the room tour and उसके काफ़ी 1-2 घंटे के बाद मैं आपसे बात कर रही हूँ because I just
took like a me time. I relaxed. I had my coffee. आज मैं ज़्यादा मैंने फिर भी नहीं बोल के भी काफ़ी व्लॉग कर लिया है, बट यू नो आई एम फम्बलिंग ऑलरेडी बिकॉज यू नो दैट आई एम सो टायर्ड. फिर भी मैंने सोचा कि फर्स्ट डे थोड़ा जितना भी व्लॉग कर सकती हूँ कर लेती हूँ. सो दैट वाज द रूम टूर. अभी मैं बैठी हुई हूँ बाथरूम में. आई जस्ट गॉट फ्रेशन अप अ लिटिल बिट. हम लोगों को डिनर के लिए जाना है. अभी बज रहा है 7:45 यहाँ पे जॉर्डनियन टाइम. वहाँ से इंडियन टाइम से यहाँ पे 2.5 आवर्स अप्रॉक्सीमेटली पीछे हैं. तो वहाँ पे यहाँ मतलब 2.5 आवर्स और लाइक ऑलरेडी आगे होगा इंडिया टाइम. हंगरी तो नहीं है, आप लोगों ने देखा होगा इतना खाना खाया है, लेकिन एनीवेज फॉर फॉर्मेलिटीज विल जस्ट गो. अभी ड्रेसअप होने का बिल्कुल भी मन नहीं है. नॉर्मल कैजुअल पहन के आई नो आइडली सेंट रिलीजियस में रह रही हूँ. आइडली तो अच्छे से रेडी हो के बिकॉज देयर रेस्टोरेंट्स आर फैब एंड दे आर लाइक द फेवरेट्स ऑफ जॉर्डेनियंस ऑल्सो, लाइक टॉप मोस्ट रेस्टोरेंट्स. वी आर गोइंग टू वन ऑफ द रेस्टोरेंट्स जो अरबिक फूड ही है वहाँ पे भी, मिडिल ईस्टर्न. लेकिन आई एम श्योर सभी ऐसे नॉर्मली तैयार होके आएंगे. तो आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग. आई एम जस्ट वेयरिंग लाइक एनी आउटफिट एंड गोइंग, नॉट डूइंग मेकअप हेयर नथिंग. जस्ट कैजुअली चली जाएंगे. खाना खा के आके आई जस्ट क्रैश. in this meanwhile I am, since it's a vacation, मुझे काम भी करना था. I had to edit some stories, upload for you guys. तो वो सब किया, पोस्ट किया. वापस आके भी if I have any energy I'll edit this vlog and upload it. Otherwise it's going tomorrow or day after, whatever, let's see. But I'll try to do it today so that I don't have any backlogs and फिर pile on हो जाएगा. तो ये सीन है अभी. तो थोड़ा सा रिलैक्स किया मैंने. सनसेट एंजॉय किया मैंने अपने ही रूम से, अकेले इतने बड़े रूम में. बट इट्स ओके, सम टाइम इट्स गुड टू हैव सम मी टाइम एंड दैट्स व्हाट आई एम एंजॉयिंग. अभी थोड़ी देर में डिनर के लिए जाऊंगी. पॉसिबल होगा तो थोड़ा व्लॉग कर लूँगी, नहीं तो सी यू लेटर.